Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. I'm Ashish Bhargav and welcome to another episode of Deep Dive session, and here we are going to discuss about the important discussion about data protection bill. Recently it was passed in the Rajya Sabha. It was passed initially from the Lok Sabha and went to the Rajya Sabha. As we know that the bill formation process in our country is not quite lengthy. We initially start from the Lok Sabha, the bill passed from the Lok Sabha and then went to Rajya Sabha, and once the president sign on it, the bill will become an act. So why this data protection bill is important? Initially, once it was started earlier, so it was like such kind of things that like initially once it was started, so there were lots of the opposition party wanted to disaggregate about all these things, but now we will go and we will discuss about each and every fact in detailed manner about what exactly data protection bill is, what are pros, what are cons, what can be the consequences, right, and what it should be the way forward. See, in all these things that we will discuss in detailed manner. So if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentor. So about current affairs, as I told you कि ये सबसे best way होता है current affairs को सही करने का is that is to study newspaper and magazines. And deep dive session is why it is important. We discuss about all the burning issues. So detailed progress each day adds up to a big results, a quote of the day. And as I told you that we have taken initiative weekly current affairs quiz, and that weekly current affairs quiz, that is, as we know, is the weekly current affairs quiz is from every Friday at live at 4 p.m. So here we discuss about the Hindu and Indian Express and based MCQs, and that kind of MCQ is very important. Here the article is talking about is the right to privacy nor the right to information, right? So why, and this is the professor of Indian Institute of Technology IIT Delhi, that is Ritika Khera. इसमें इन्होंने क्या बात की है, that personal data bill that will boost digital economy, that is called says NASCOM. So इसमें क्या क्या चीज़ें हैं that is need to be know about it. So the first thing that you should know about what is data protection bill is, and what was the earlier iteration, and what exactly is the issues is going on regarding this data protection bill. So now we discuss each and every fact in detailed manner. Here is the journey of the bill. So August 2017 was a year where privacy as a fundamental right reaffirmed in Justice K.C. Puttaswamy versus Union of India by Supreme Court. So it was privacy and right to privacy right to privacy is Article 21 of the Constitution. So Justice Shri Krishna Committee constituted to examine data protection issues. What it happened in July 2018, committee released draft of personal data protection bill PDPP and report, and 2019 revised data bill sent to a joint parliament committee for the both houses to review, and later in December 2021 the JPC Joint Parliamentary Committee released its report and a new version of law as a data protection bill. तो ये जो है इसकी शुरुआत जो है data protection bill की, it was started from the August 2017, right?
तो 2022 में क्या हुआ, नवंबर 2022 में आपके अगस्त 2022 में ड्राफ्ट किया गया, डीपीडी विथड्रॉन, एंड नवंबर 2022 माइटी दिस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट released draft digital personal data protection bill DPD for the public consultation. 5th July 2013 2023 यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया ड्राफ्ट DPDP बिल 2023. Now there are key terms in PDP Act. Data fiduciary who decides the purpose of data processing, डेटा प्रोसेसर, और इस टाइप का टर्म जो है आपके एग्जाम में क्या पूछते हैं, वो पूछेंगे इन डेटा प्रोटेक्शन बिल द टर्म इज यूज्ड इन व्हाट कंटेक्स्ट. सो ऑब्वियस दैट वी शुड नो अबाउट इट कि लाइक डेटा फिड्यूशरी इज फॉर हु डिसाइड द पर्पस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसर इज दैट हु प्रोसेसेस डेटा ऑन बिहाफ, डेटा प्रिंसिपल दैट इंडिविजुअल हुज डेटा इज प्रोसेस्ड. डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि लाइक पर्सनल डेटा एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा, critical personal data categorized of data which required most protection as defined by the PDP Act. So अब देखते हैं इसकी में क्या क्या है, and so we will discuss in detail that how is the digital personal data protection bill 2023 different from the previous iteration, what are the domains where it has made advances and the ones where it is lacking. So what is the history of data protection bill? India does not have a stand-alone law on data protection. Use of personal data is regulated under the Information Technology IT Act 2000. फिर बाद में 2017 में द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेड द BN कृष्णा कमेटी. ये कमेटी के नाम जो हैं वो इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपको याद रखने की ज़रूरत होती है, बिकॉज एग्जाम के टाइम में आपसे पूछेंगे विच कमेटी इन 2017 एग्जामिन दिस. So in 2017, the central government constituted the BN Krishna Committee to examine issues relating to data protection in the country. Based on the recommendation of the committee, the Personal Data Protection Bill 2019 was introduced in the Lok Sabha. It's the very first time BN Krishna Committee ने constitute किया था 2017 में for the examine the data protection issues. It is formulated based on the data regulation of European Union General Data Protection Regulation GDPR, which empowers citizens to have a greater say in how their online data is used. What are the key features of the bill? So initially the personal data is defined as the any data about an individual who is identifiable by or in relation to such data. Applicability, the bill applies to the processing of digital personal data within India where such data is collected online, और या तो उस डेटा को हमने ऑनलाइन कलेक्ट किया है, कलेक्टेड ऑफलाइन, और it is digitized. So it will also apply to the processing of personal data outside India. Make sure it's not confined to the territory of India. It not confined to the only our country. It confined to the another country outside India also. And if it is for offering goods or services in India. Consent ये है इसमें कि जो personal data है that may be processed only for a lawful purpose after obtaining the consent of the individual, but make sure that consent is important. Without the consent of someone, you cannot mine the somebody data for the what purpose you are getting that data is. You should know, you should be aware, you must know the person that in what purpose that you are taking such data. And for individual below 18 years of age, that consent will be provided by the parent on the legal guardian, and consent may be withdrawn at any point of time, right? So right of data principal is an individual whose data is being processed, or he or she will have the right पहला कि obtain information about processing, seek correction and erasure of personal data, to nominate another persons to exercise rights in the event of death or incapacity and grievance redressal. So obligation of data fiduciaries. Data fiduciary is the entity जो कि determine करता है कि like what is the purpose and means of processing. Data fiduciary must make reasonable efforts to ensure the accuracy and completeness of data. पहला. दूसरा है कि build reasonable security safeguard to prevent data breach. And the third one is talking about inform the Data Protection Board of India and affected persons in the event of a breach. Erase personal data as soon as purpose has been met and retention is not
necessarily for legal purpose. तो अगर आपका देखा होगा कि पर्सनल डेटा अगर आउटसाइड इंडिया होती तो ये अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट टू कंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन. इसमें किस किस को एग्जेम्पशंस दी गई है, मतलब उनके ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगी. जैसे आपको पता होना चाहिए जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर ऑफ 2005 एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन डज नॉट कम एम्बिट ऑफ लाइक गवर्नमेंट कहाँ टैक्स पे डिफेंस पे कितना खर्च करती है, आर्मी पे कितना खर्च करती है, बिकॉज ये चीज़ें एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि आरटीआई में, बिकॉज दिस इज वायलेशन एंड दिस इज सम हाउ वी कैन से एज अ वायलेशन ऑफ समवन प्रिवेसी, राइट. So right of the data principle and obligation of data fiduciary will not apply in specified cases such as prevention and investigation of offences, enforcement of legal rights or claim. And the central government may exempt certain activities. पहला, in the interest of security of state and public order, research, archiving or statistical purpose. Data Protection Board of India. It will be established by the central government. इसके key function of the board include monitoring compliance and imposing penalties, directing data fiduciary to take necessary measures in the event of a data breach, grievance redressal. अपील कैसे हो सकती है इसकी जो अपील होगी वो जो डिसीजन होगा वो बोर्ड का होगा. एंड द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल इज काइंड ऑफ बेंच ऑफ कोर्ट. ट्रिब्यूनल जैसे आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. सो जो एनजीटी है, एनजीटी इज बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. और एनजीटी वर्क्स कैसे करती है इंडिया में, दैट सिंपली लाइक जो ट्रिब्यूनल्स होंगे आपके वो काम करेंगे ऐसे, जैसे एक कोर्ट के टाइप से होते हैं लोग, जैसे कोर्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे होते हैं इसमें. मतलब कोर्ट के एक पैनल और बेंचेस होते हैं, दैट इज काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल. देखो सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल का, मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच होगा एंड प्राइवेसी होगी, कंप्लायंसेस एंड डेटा ब्रीच. सो मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच विच मीन्स दिस फ्रेमवर्क encompasses various legislative measures such as डिजिटल इंडिया बिल दैट वुड रिप्लेस एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. हमारे इंडिया में क्या है कि जो आपका IT एक्ट 2000 है वो इस काइंड ऑफ ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है. IT एक्ट it means is a kind of any data violation is going on. Right? Data breach मतलब multiple exemptions were provided to prevent data breaches such as इसमें मेंशन की हुई है. ठीक, और इसमें आपको एक चीज़ देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट विच इज़ कॉल्ड UNCTD, अंकटा जिसे कहते हैं, 137 out of 194 countries have put in place legislation to secure the protection of data and privacy. So what are the issue of the bill? इस इशू में क्या क्या जो अपोजिशन का मानना है, क्या क्या इश्यूज हैं इस बिल में. पहला आर्टिकल 21 जो है हमारा राइट टू प्राइवेसी. It violates the fundamental rights to privacy because of exemption provided to the state on grounds such as national security. Regulation क्या है? The bill does not regulate risk of harms arising from processing of personal data. Rights क्या है? The bill does not grant the right to data portability and right to the forgotten to the data principle. Personal data outside India. This mechanism may not ensure adequate evaluation of data protection standards in the countries where transfer of personal data is allowed. Independence क्या है? In short term 2 years के लिए है of the fundamental members of Data Protection Board of India, which scope for reappointment may affect the independent functioning of the board. Multiple exemptions हैं, exemptions citing national security etc. resemble China data regulation. और right to information act जो है ये the personal data of government functionary is protected, making it difficult to share with an RTA applicant. कोई भी compensation नहीं है. आप देखें सेक्शन 43 ऑफ IT एक्ट का 2000 का impose an obligation on corporate to avoid damage to affected person in case of negligent handling of their sensitive data.
However, the bill excludes the application of section 43A. मॉडल्स ऑफ डेटा प्रोडक्शन लॉ, पहला है आपका यूरोपियन यूनियन मॉडल, तो GDPR जो है आपका दैट फोकसेस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोडक्शन लॉ फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। राइट टू प्राइवेसी जो है ये इंश्राइन है एज अ फंडामेंटल राइट दैट सीक्स टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल डिग्निटी एंड हर राइट ओवर द डेटा दैट शी जनरेट्स। और डिजिटल सर्विस एक्ट की बात करें दैट फोकसेस ऑन इशू सच एज रेगुलेटिंग हेट स्पीच, काउंटरफिट गुड्स एट्सेट्रा। बात करें डिजिटल मार्केट्स एक्ट की, इट हैज़ डिफाइंड अ न्यू कैटेगरी ऑफ डोमिनेंट गेटकीपर प्लेटफॉर्म्स एंड इज फोकस्ड ऑन नॉन कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंस बाय दीज प्लेयर्स। US मॉडल की अगर बात करें यहाँ पे, द प्राइवेसी प्रोटेक्शन इज लार्जली डिफाइंड एज लिबर्टी प्रोटेक्शन। लिबर्टी मतलब लाइक टू डू एनीथिंग विच इज फोकस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल स्पेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। So there is no comprehensive set of privacy rights or principles that collectively address the use, collection and disclosure of data in the US. चाइना मॉडल की बात करें तो the Personal Information Protective Law PIPL है that gives data principals the right to prevent the misuse of personal data. और मैं बात करूँ डेटा सिक्योरिटी लॉ की, it requires business data to be categorized by different levels of importance and puts new restrictions on cross-border transfer. It gives the information overreaching powers to the both collect data and regulate private companies. So अगर बात करें डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर 9% कंट्रीज़ के पास ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है, 71% कंट्रीज़ जो है इस लेजिस्लेशन, इन सारे कंट्री जो आप इस कलर की आपको दिख रही होंगी, और जो आपके 5% कंट्रीज़ है जहाँ पे कोई भी डेटा लॉस नहीं है, जहाँ पे ये कंट्री हो गई यहाँ पे इस वर्ल्ड मैप में। And economic transactions legislation, consumer protection, no data, privacy and data protection legislation, cyber crime legislation, ये सारी कंट्री अगर आप देखो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इन कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो डिफरेंट है। और हमारे इंडिया में जो है ये जर्नी मैंने आपको बताई कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइती डिसाइड करती है। सो द मेजर डेवलपमेंट केम इन December 2021 when the Data Protection Bill 2021 was released. However, it was withdrawn in the Parliament by Minister of Communication Information Technology Ashwini Vaishnav on August 3, 2022. And who does it protect? Obvious मैंने आपको बताया इसमें कि कौन प्रोटेक्ट करेगा। जो न्यू बिल इंट्रोड्यूस है उसमें ड्यूटीज़ एंड पेनल्टीज़ मेंशन की हुई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल मैनर में डिस्कस की, राइट। And who does exempt, that we had already discussed about it. और जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 23 है उसको पास किया गया बाय द राज्यसभा ऑन वेंसडे आफ्टर मोस्ट अपोजिशन MPs स्टेज अ वॉकआउट एंड द बिल वाज सपोर्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द NDA, बीजू जनता दल BDL एंड YSR कांग्रेस पार्टी। अगेन एक बार ठीक से इसको क्रक्स को समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखो पहले इसमें क्या है, डिकोडिंग द डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये शॉर्ट समरीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें पहला इसमें स्टेज क्या है कि डेटा कैन बी प्रोसेस्ड और शेयर्ड बाय एनी एंटिटी ओनली आफ्टर कंसेंट। सो इट मीन्स कंसेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब बिना बताए आप किसी से डेटा नहीं ले सकते हो। सो इट मीन्स दैट कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। विदाउट समबडी कंसेंट यू कांट माइन डेटा। सेफगार्ड्स की बात करें इंक्लूडिंग पेनल्टीज इंट्रोड्यूसिंग टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा। ऑल डेटा टू बी कैटेगराइज्ड अंडर 3 हेड्स। पहला आपका जनरल, दूसरा सेंसिटिव डेटा एंड क्रिटिकल डेटा। 3 टाइप के हेड्स रखी हुई हैं। जैसे पहला आपका है जो कैटेगराइज्ड डेटा है, उसमें जनरल डेटा होगा। जनरल डेटा इसमें जैसे बैंक के फॉर्म्स एंड ऑल, ये सारे इसमें आपको जनरल डेटा में आ गए। सेंसिटिव डेटा विच मीन्स दैट जिससे उसकी प्राइवेट लाइफ और पर्सनल लाइफ उसकी वायलेट हो सकती है। तीसरा आपका क्रिटिकल डेटा। क्रिटिकल डेटा मतलब इट्स नॉट टू बी शेयर टू एनीवन, जैसे उसकी बैंक अकाउंट्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें आप उसको पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। उसकी वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी है एंड ऑल। गवर्नमेंट का रेगुलेटरी रोल क्या होगा? So obvious that government will have to power to obtain any users non-personal data from companies.
नॉन पर्सनल डेटा, देखो कंसेंट को याद रखना, नॉन पर्सनल डेटा को गवर्नमेंट ले सकती है. एंड द बिल मैंडेट्स दैट ऑल फाइनेंशियल एंड क्रिटिकल डेटा हैज़ टू बी स्टोर्ड इन इंडिया. सेंसिटिव डेटा जो है हैज़ टू बी स्टोर्ड इन इंडिया बट कैन बी प्रोसेस आउटसाइड विद कंसेंट. एवरीवेयर कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट. विदाउट समबडी कंसेंट, और आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी उस कंपनी को कि ये डेटा आप किस पर्पज से सामने वाले से ले रहे हो. What companies have to do? Social media forms to formulate a voluntary verification process for users. Sharing data without consent entail a fine of 15 करोड़ रुपये का फाइन है, और 4% of the global turnover. And data breach or inaction will entail a fine of rupees 5 crore or 2% of global turnover. So guys, this is all about the session. And I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this session, please let me know in the comment section. और जितने भी बर्निंग इशू होंगे मेरे दोस्त, वो हम डिस्कस करेंगे इसी इसी डीप डाइव सेशन में. एंड आई होप कि दैट यू एंजॉयड द सेशन अ लॉट. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड आपको ये सेशन कैसे लगी, इसके बारे में कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं. एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर many friends. So if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned. We'll meet you tomorrow for the weekly newspaper analysis session. So till then, bye bye, take care and good night.